Hello, everyone. Good afternoon. Good evening. I welcome you all to this weekly jam today, and we have Zunerah Shah with us. She'll be talking about Power BI and its visualizations, analytics, and many more things. So, hi, Zunerah. Over to you. Hi Abdul, thank you so much. Hi everyone, this is Zunerah Shah, and today I've recently joined Subcom as a BI developer, and today I'll be presenting a quick demo on the data visualization in Power BI. So, without wasting any time, let's start with the presentation. Let me share my screen first. Okay, is my screen visible? Yes, it is. It is Okay, visible. so yeah, thank you. So let's get started with the session. So we have the data visualization in Power BI. Before moving towards the Power BI, what is Power BI? Why do we use it? Let's first discuss on the business intelligence. So basically, what the business intelligence is. Business intelligence is a process for analyzing data and delivering informations to the actionable information to the executive managers, workers to make the more insightful and data driven decisions, right? So why do we do business intelligence in a way we do a business intelligence to get the better outcome, to get the better know-how, the understanding of the organization, like where the organization, where is it is standing, and how are we doing, how we are progressing in our different sectors, right? So the main goal of the BI is to drive the better business decision that enable the organization to increase revenue. So the main motive of the BI to do the business intelligence is to know the right view where the organization is standing. So yep, so this is the basic goal. And how we do that, we usually compare the present and the historical data. We understand the needs of the business, and we try to give the outcome in a way that the organization get a fruitful amount from this. Now, business intelligence does not only do the in business intelligence we does not only do the analysis on the data, but obviously this includes the data preparation, analytic querying of the prepared data, distribution of KPI. So what are the KPIs? Every business has its own key performance indicator. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेसिकली वो होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक आपका समझ लें एक टारगेटेड एक गोल होता है जिस जो हमें अचीव करना होता है. सो उन केपीआईज को हम सामने रखते हुए अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस कर रहे होते हैं, और हम उसके थ्रू सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये केपीआईज हमारी यहाँ इफेक्ट कर रही हैं, या ये वाली केपीआईज हमारी ज़्यादा यहाँ अच्छी परफॉर्म कर रही हैं. तो इस तरह की एनालिसिस बीआई में हम कर रहे होते हैं. एंड देन दिस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग हम जो है अपने बिजनेस यूजर्स को देते हैं, सो दैट दे कैन गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट. और वो वहाँ से जो भी बेटर डेटा निकाल सकते हैं, इन इंसाइट्स निकाल सकते हैं कि हम इन एरियाज में इम्प्रूव कर सकते हैं. इस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है पर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस इंटेलिजेंस. Now, what is Microsoft Power BI? So this is one of the business intelligence tool. We have multiple tools, बहुत सारे हैं, but Microsoft Power BI is one of them. It is very easy to use. Power BI is a self-service cloud-based data analysis and visualization tool that lets you interactively explore data to gain insights. It has more than 70 on-premises and cloud data storages, cloud data sources. अच्छा, cloud data sources भी बहुत सारे हैं, on premises भी बहुत सारे हैं. I'll show you on the next screen के कौन कौन से data sources हैं. But within the Power BI desktop we can connect to like many. Excel से connect हो सकता है, flat file से, databases से. We have multiple of them, right? अच्छा, within Power BI desktop you can analyze the data. You can analyze the data as you want with a very powerful data mashup engine. How do we do that? I'll show you in the next screen as well. We can also model the data, build our star schema, add the measures and the calculated column with a super fast engine. अच्छा, first of all, हम अपने डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं. अच्छा, कुछ पावर बी आई टूल्स में, सॉरी, कुछ बी आई टूल्स में हम डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बट वी कैन डू द ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर बी आई.
we can model our data. Power BI basically is designed in a way that it used the very basic database structure that is called the star schema, or we can say it Kimball model or the dimensional modeling. A star schema is basically the combination of the fact tables and the dimension tables. Now, what are the fact and what are the dimension tables? Fact table is basically a table that consists uh, of anything that is measurable, right? Any transactional entity or any measurable entity should be the part of the fact table, right? And now fact tables should consist of two things. One are the keys, and second are the measurable items, measurable entities. And what are the dimension table? Dimension tables are the one that contain the descriptive or the characteristics of that fact table. Let's suppose एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल्स की. ठीक है, सेल्स की एग्जाम्पल, दिस इज क्वाइट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव. सेल्स की एग्जाम्पल्स में क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज हम सेल का एनालिसिस कर रहे हैं प्रोडक्ट वाइज. हम उसकी प्रोडक्ट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के भी एनालिसिस कर सकते हैं, किस एम्प्लॉय ने कितनी प्रोडक्ट्स सेल की हैं उस पर भी एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये जो डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं, लाइक लोकेशन हो गई, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपकी डेट रेंज हो गई, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द डायमेंशन टेबल. एंड वी डोंट हैव वन डायमेंशन टेबल, वी शुड हैव डिफरेंट डायमेंशन टेबल फॉर ईच एंटिटी, फॉर ईच डिस्क्रिप्टिव एंटिटी, राइट? तो ये इसके डायमेंशन टेबल्स हो गए. एंड फॉर द फैक्ट टेबल, फैक्ट में हमारे पास सारी मेजरेबल चीज़ आएंगी. मेजरेबल चीज़ें इन शॉर्ट, इन अ सिंपलेस्ट वे आई कैन से कि कोई भी न्यूमेरिक डाटा होगा जिस पे हम अपनी एग्रीगेशन, समेशन, इस तरह की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ें फैक्ट टेबल में आएंगी. अच्छा, सेल्स के सिनेरियो में हमारे पास फैक्ट टेबल में उसकी यूनिट प्राइस आ सकती है, उसका डिस्काउंट आ सकता है, उस पर टैक्स जो भी एप्लीकेबल है वो आ सकता है. सो यू नो, ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर इन द न्यूमेरिक फॉर्म. तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ फैक्ट टेबल. और जो डिस्क्रिप्टिव डाटा है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कलर कौन सा है और उसका साइज़ क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इस टाइप की चीज़ें सारी हम डायमेंशंस में रखते हैं. ठीक है, एंड वी रिलेट देम यूजिंग द कीज़. तो वो जो कीज़ होती हैं दैट शुड बी द पार्ट ऑफ फैक्ट टेबल. तो फैक्ट टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. वन इज द मेजरेबल एंटिटीज एंड सेकेंड आर द कीज़. So basically, Power BI recognize this model, and they can better perform in using the star schema, right? And we can add measures and calculated column. Measures are basically a summation of मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो समेशन बोल सकते हैं, या किसी भी एक, आप अगर लेट्स सपोज इफ यू हैव द टेबल, तो टेबल पे जो भी हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स को लेके, मल्टीपल कॉलम्स को लेके, अगर हम उन पे कोई समेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उससे हम मेजर बना सकते हैं. मेजर्स में बहुत सारे फार्मूला यूज़ होते हैं. आई कैन शो यू द फार्मूलाज एज वेल, एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स आर द सेम वे as the measures. So this all can be done in Power BI. And lastly, you can publish your dashboard and visualization tool in cloud and share to those who you want, right? So let's suppose if you have the data, and you can import the data to Power BI, and you can make the visualization as per your requirement. Now, why Power BI? So I'm not going to debate here why Power BI over the other BI tools, but there are a few things that I think everyone should know who is using this Power BI tool. The first one is the smooth user interface. Smooth user interface, like it's as simple as you use the other Microsoft tools. You can easily drag and drop the visualizations on your canvas area. You don't need any third party tool or application or involvement to help you progress in Power BI. This is as simple as that. This allow you to view, analyze, and visualize huge quantities of data. It has a data compression. So basically, what the data compression is, Power BI uses powerful compression algorithm to import and cache the data within the PBX file. Let's suppose in Power BI, if we are importing the data of 1 GB, Power BI is not going to import all the, I mean, it is going to import all the data, but it is going to compress the data to 50 to 20 MB. So this is the strong data compression engine that Power BI uses. तो हमें इसमें ना आसानी होती है कि हमारे पास अगर 1 GB का भी डेटा है तो कभी भी 1 GB का डेटा यूज़ नहीं हो रहा होता, वो कंप्रेस होके पावर BI में आके वो हमेशा कम साइज का हो जाता है.
So it has the data compression engine. Next is provide the free canvas for drag and drop navigation. I'll show you in later screen. And the most important point is the integration with Microsoft services. Since Power BI is the part of Microsoft, so it can easily be integrated with other Microsoft product suites. Okay. Anyone who has a hands-on experience with a Microsoft 365 can easily connect to Power BI, and it can connect to other Power BI products or other Microsoft products. Another attractive point here is the flexible pricing. If I compare Power BI with other BI tools, I'm not sure about the licensing of all other BI tools, but if I compare it with the W, Power BI starts at the $10 per user per month. Which is, I think, very cheap as compared to the Tableau, which is starting at the $35. So Power BI की licensing में we have, I guess, 2 to 3 users. First one is the viewer user, जिसमें that is free of cost, and two more users where we have the pro user and the premium users. वो $10 से और I guess $20 से start होता है. But this is relatively very cheap as compared to the Tableau. So these are the few points of Power BI. I think Power BI is very useful for the organization with a small scale जहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं है और I mean वहाँ पे हम easily Power BI को use करते करते दूसरे BI tool पे भी switch हो सकते हैं, but that completely depend on your organization needs and requirements. So moving forward, okay, so these are the few main components of Power BI. Um, The first one is the Power Query. Now, as I mentioned previously, Power BI में हम data transformation भी कर सकते हैं. So the Power Query editor is basically the responsible of transforming our data. The data transformation and mashup engine है ये that enable you to discover, connect, combine, and refine data from multiple data sources. Let's suppose if you're getting the data from the Excel file, from the other files, तो उन सारे multiple data sources को हम एक जगह combine कर सकते हैं. We can perform the data transformation. Obviously, हर time हमारे पास data refined form में नहीं होता, so we can perform its transformation using the Power Query editor. This is the part of Power BI desktop, and this can be added to your Excel as well. It is मतलब ये बहुत सारे लोगों ने बहुत use भी किया हुआ होगा Excel में, but I'll show you how to use in Power BI desktop. Next, we have the Power Pivot. Power Pivot क्या होता है? This is the data modeling and calculation engine that lets you create data models, establish relationship, and create calculation. Like I mentioned before, data models कौन से बनाते हैं हम? Star schema बनाते हैं, तो multiple star schemas जो हमें बनाने होते हैं, calculations करनी होती हैं, like major calculated column, और relationship create करने होते हैं. Obviously हमें एक मॉडल बनाने के बाद फैक्टर डायमेंशन को रिलेट करना होगा, राइट? तो उस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं that is being done by the Power Pivot. And it uses data analysis expression language, dex language यूज़ करते हैं फॉर सिंपल एंड डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस. जो पूरी एनालिसिस हो रही होती है, हम बेसिकली उसके जो पीछे एक लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड द डेक्स लैंग्वेज. ये हमने ये भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी हाउ डू वी डू यूज़ दैट. Now, other thing is the Power View. Power View is the fundamental data visualization component of Power BI. Um, of Power BI, you can filter the data for each visualization component and even for the entire report. तो Power BI के user interface पे we can filter our data as हर visualization पे filter कर सकते हैं on a single page on all the pages within the Power BI desktop. Then we have Power BI desktop that we are going to use in the later session. That's as the integrated development tool for Power Query, Power Pivot, Power View, and that lets you create queries, models, reports, and XYZ. Another feature is that Power Q&A. This is, I mean, this lets you explore your data in your own words. Let's suppose if I've created the visualization, मैंने बहुत सारी visualization बना ली हैं, and I'm interested कि मैं उसमें से sales निकाल लूँ for the last year. So I can simply write as sales amount for November 2021. तो मैं अपने इतने simple natural language में भी लिखूंगी तो it will going to get me the my required data. Right, so this is Power Q&A. Power Q&A, I believe premium and pro users पे होता है. It's not available on the viewer user.
So this is all about the main components. We have another thing on Power BI, that is a Power BI service. So Power BI desktop versus Power BI service. What is Power BI service? If I compare it with the Power BI desktop, desktop is a desktop version, and it we can do data analysis, report creation. It includes the Power Query Editor, and it is 100% free. You can download it using powerbi.microsoft.com. फौरन डाउनलोड हो जाता है, बहुत easy to use है. Next thing is the Power BI service. Power BI service is basically a cloud-based service or a software as a service part of the Power BI. It has light report editing. I mean, you can edit the report, but not to the full extent. You can create the report, you can edit the report, but it's better to do such things on the Power BI, and then you can publish these reports using the Power BI service. Basically Power BI service का मकसद ही यही है, so that we can share and distribute our report. You can log into app.powerbi.com to access the Power BI service. Most commonly you will use the Power BI to create the report and Power BI service to share your report with others. So this is the main key difference between the two of them. So this is the user interface of Power BI desktop. When you first log in, you will get the get data and the recent resources option. You will see the your recently edited report, or if you want to open any other report. This is the free canvas area that I was mentioning. Okay, well, once you go into the Power BI desktop, you will see there are three tabs at the top left of your screen. The first tab is the report view. Report view is the one where you can create and visualize. Second tab is the data view. Data view is where you can see your data. जो भी tables हैं, that all the metadata that can be available, that should be available in the data view. Then we have the model view. Model view is where you can see and manage the relationship among tables in your data model. Model view में basically हमारे पास star schema होता है, and we can manage the relationship between the dimension and the fact tables. Then we have the canvas area where we can drag and drop. We have the filters pane on the right hand side. यहाँ से हम filter कर सकते हैं अपने visualization पे, हम filtration apply कर सकते हैं on the whole page, on all the pages. Then we have the visualization pane where we have the multiple of visualizations. In visualization को हम drag and drop कर सकते हैं on the canvas area to perform our analysis to create the report and dashboards. And then we have the fields pane. Fields में हमारे पास हमारा सारा data होता है. We have all the tables that are imported to the Power BI. Okay, so that was all about the visualization. But there's another thing that we can do on in the Power BI, like I mentioned before, is the transformation of the data. Transforming data, obviously data set rarely come in a perfect form, right? And you need to transform the data to fit in your needs. Data set may contain the extra characters, blank rows, column that you know need reluctant data. So we need to clean that up before creating a model, right? So to perform the transformation on our data, we will be using the Power Query Editor. This tool allow you to edit the data prior to loading. You can use it to format the data set and decide what gets loaded. Let's suppose हमने एक table load किया है, उसमें extra columns हैं, we can remove that column. किसी column की हमें data type change करनी है, हमें कहीं से कुछ चीज़ें remove करनी है, blanks remove करने हैं, इस type की जो चीज़ें हैं, in short वो हम सारी Power Query Editor में कर सकते हैं. Power Query Editor basically uses the M language. जैसे Power Pivot यहाँ पे text language यूज़ कर रहा था सर, Power Query Editor M language यूज़ करते हैं. You don't need to know the M language, लेकिन ये Power BI जो है वो M language यूज़ करता है for Power Query Editor. So basically, Power Query Editor is within Power BI desktop, but this is another screen that you always need to save, close, and apply in order to make the changes effective for the Power BI desktop. Right, I'll show you how to do the transformation. Let's quickly go through the visualization of data. So there are multiple visualizations
visuals available in the Power BI desktop, but these are few of them that I'm going to explain. The first one is the column and bar chart. बहुत सारे लोगों ने इन सब पे काम किया हुआ होगा, तो I'm not going into depth के कहाँ पे कौन सा use करना चाहिए. That is completely depend on your requirement. Column chart and bar chart help you look at the specific value across multiple categories. Let's suppose अगर यहीं पे हम ये वाला chart देखते हैं, we have the APAC EMEA region और वहाँ पे उनकी sales define की हुई है using column chart and the bar chart. Anything that is vertically representing should be the column chart, and anything that is horizontally representing is known as the bar chart. Then we have the column and bar chart. Okay, so we have the column and the bar chart. We stack column and the bar chart, where we have multiple elements in one bar. I mean this one where we have multiple columns, multiple elements, और वो एक बार पे represent हो रहे होते हैं. And how do we differentiate it by is by using the legend, जो ये ऊपर छोटा सा legend नजर आ रहा है, उसके through हम यहाँ पे differentiate कर सकते हैं. Then we have the cluster bar chart and the cluster column chart. यहाँ पे this is same as the stack bar chart. A part of the difference is that they are located next to each other. The columns are located next to each other. Then we have the 100% stack bar chart. This is basically showing the 100% value of anything, और जो भी हम वहाँ पे measure कर रहे होते हैं, that should be the relative percentage of multiple data series. ठीक है. Then we have the combo chart. Combo chart is like a stack bar chart and the line chart. Again we have the legends above, तो हम legends को देखते देखते सारी visualization कर सकते हैं. And if we hover on the graph, उन सब पे values भी आ रही होती हैं, तो it's simple to visualize. Now we have the line charts. Line charts are used to track the changes over short and long period of time. कोई भी हमें ओवर द टाइम पीरियड शो करनी होती है, कोई भी इस तरह की सेल्स हमें शो करनी है, तो हम लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव द एरिया चार्ट. एरिया चार्ट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट, बस यहाँ पे एक शेडेड एरिया होता है जहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं. तो लेट्स सपोज अगर हमें बहुत माइनर माइनर सी चेंजेस दिखानी होती हैं, हमें पास बहुत सारा डेटा होता है, तो हम उसके लिए एरिया चार्ट के थ्रू हम ओवर द टाइम या ओवर द पीरियड चेंजेस दिखा सकते हैं. Then we have pie and donut charts. These charts are helpful for showing the relationship of parts to the whole. किसी भी चीज़ पे अगर हमें full part पे particular portions mention करने होंगे या उस तरह की analysis करनी होगी, तो हम pie chart and donut chart use कर सकते हैं. Then we have other sort of visualization tools that are cards, gauge, and KPIs. These visualization basically help in showing the overall level of performance. Cards show one value, whereas cards can display multiple values, जो यहाँ पे mention है. And then we have gauge and KPIs that are designed to compare the actual data to the budgeted data. कोई भी हम एक target उसको define कर सकते हैं और उस पे हम दिखा सकते हैं कि हम अभी इस position पे हैं. ठीक है, तो इस तरह की सारी विजुअलाइजेशन हम पावर बीआई में कर सकते हैं. अगेन दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऑन योर बिजनेस नीड. अब मैं इस तरह नहीं बता सकती कि इस वाले सिनेरियो में हमें ये वाली चीज़ यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली बीआई यूजर्स को पता होना चाहिए कि उनकी बिजनेस की नीड क्या है एंड हाउ परफेक्टली वी कैन एनालाइज द डेटा. So let's move towards the demo. Okay, so this is the sample data for human resources with an organization. We have multiple tabs in here. Let's just explore the first dashboard. So this is the first dashboard where we are seeing the, just give me a moment. Okay, so this is the first dashboard where we are seeing the new hires. New hires is SPLY means same period last year. So this is the data. This is basically the clustered column chart. यहाँ पे सारा data show हो रहा है. अच्छा, these tools are very interactive. Let's suppose if I select the July का data, अगर मैं select करती हूँ तो
सारी विजुअलाइजेशन एज पर द जुलाई डेटा वो कस्टमाइज हो जाती हैं. सो दिस इज़ वेरी इंटरैक्टिव टूल. प्लस हम इंटरेक्शंस कभी कभार क्लोज भी कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट. एंड दीज आर द न्यू हायर्स. यहाँ पे हमारे पास न्यू हायर्स बाय मंथ हुए हुए हैं कि कितने फुल टाइम एम्प्लॉयर्स हैं, कितने पार्ट टाइम हैं. और ये विद इन द रेंज हमने फ्रॉम जनवरी टू नवंबर तक की रेंज में हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं. नाउ वी हैव द न्यू हायर्स एंड एक्टिव बाय रीजन. यहाँ पे कौन कौन से रीजन के थ्रू हमने एनालिसिस की हुई हैं. दिस ऑल कैन बी डन. आई मीन दिस इज़ एज सिंपल एनीवन कैन डू दैट आई वुड से. यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, वाई एक्सेस पे कौन सी रखी हुई हैं. इस तरह हम इजीली वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप. ये फील्ड्स वाली पेन में हमारे पास सारा डेटा होता है जो हमारा टेबल है. और वहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऑन द विजुअलाइजेशन पेन. और उसके थ्रू हम एक अपना चार्ट बना सकते हैं. नाउ दिस इज़ द ओके दिस इज़ द डोनर पाई चार्ट. सॉरी, दिस इज द पाई चार्ट. यहाँ पे फीमेल्स कितनी हायर हुई हैं, मेल्स कितने हायर हुए हैं. इस तरह हमने यहाँ पे एज डिफरेंसेस के थ्रू हमने अपनी रिक्रूटमेंट दिखाई हुई है कि लेस देन 30 एज ग्रुप वाले कितने लोग हैं और विद इन 30 to 49 वाले कितने लोग हैं एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, वी कैन चेंज द विजुअलाइजेशन. लेट्स सपोज अगर मैंने इस वाले विजुअल को अभी सेलेक्ट किया हुआ है. So this is the dark area and this is the line and cluster column chart. We can change it to the column chart or to the clustered column chart. उस visual पे click करके हम multiple chart से analyze कर सकते हैं. जो भी हमें अच्छा लग रहा होगा, I mean जो भी best suit कर रहा होगा for our needs, तो हम उस visual को select कर लेंगे. ठीक है. What else? इसी तरह यहाँ पे एक्टिव एम्प्लॉयज़ वर्सेस सेपरेशन की इन्होंने एक एनालिसिस की हुई है. अगेन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम शो कर सकते हैं. राइट, अब हमें पता है कि लास्ट ईयर में हम जनवरी टू नवंबर तक की हमें एनालिसिस करनी है. हम एक्टिव कैसे निकालेंगे, हम सेपरेटेड एम्प्लॉयज़ कैसे निकालेंगे और सेपरेटेड को हम एनालाइज कैसे करेंगे कि जो वो लेट्स सपोज अगर बेड हायर्स हैं, बेड हायर्स को हमने एक तरह से डिफाइन किया हुआ है कि वो बेड हायर्स हम कहेंगे जो कि विद इन लास्ट 6 मंथ छोड़ के चले गए. तो इस तरह की जो भी एनालिसिस होगी वो हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं. वहाँ पे हम अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, एज ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं. हमने रीजन से यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है एंड सो ऑन. दे आर मोर और लेस लाइक सेम. ठीक है. तो इस तरह की विजुअलाइजेशन होती है. दूसरी विजुअलाइजेशन हमें ऐड करनी है. वी कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप. अच्छा, मैं एक पावर बी आई क्यू एन ए के बारे में बता दूं. जैसे दिस इज़ द विजुअल क्यू एन ए. इसको अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ और लेट्स सपोज इफ आई आस्क द क्वेश्चन हियर, न्यू हायर्स बाय जेंडर. It will give me the information कि मेल हायर्स कितने थे और फीमेल हायर्स कितने थे. हमने जो अपनी विजुअलाइजेशन बनाई है, हमने जितनी डेटा एनालिसिस की है, उसी की बेसिस पे वी कैन क्वेश्चन द पावर बी आई के कितने न्यू हायर्स थे. ठीक है. तो इस तरह के क्यू एन ए हम कर सकते हैं यूजिंग दिस विजुअल. दिस इज़ द क्यू ए विजुअल. और भी इस तरह की चीज़ हो सकती हैं. जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कितने थे, पार्ट टाइम कितने थे और इन द लास्ट ईयर कितने थे. तो इस तरह की चीज़ें हम डायरेक्ट क्यू एन ए कर सकते हैं. बट हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करनी है या पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में पूछनी है चीज़ें. वी कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन इन आवर नेचुरल लैंग्वेज एंड इट विल गेट अस द रिजल्ट्स. नाउ अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखा दूँ. इन द टॉप वी हैव द गेट डेटा ऑप्शन. ठीक है. यहाँ पे ये सारे डेटा सोर्सेज हैं. इफ वी क्लिक ऑन मोर, वेयर आर द मोर. अच्छा, ये हमारे पास सारे डेटा सोर्सेज हैं. ये फाइल्स के ये ऑप्शंस हैं. डेटाबेसेस के वाले सारे ऑप्शन है. एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस है, टेरा डेटा है. इन सब से हम कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर ऑनलाइन सर्विसेज से हमें कनेक्ट करना है तो वी कैन डू दैट टू.
So there are like multiple of data sources available that we can import to, और हम directly भी connect कर सकते हैं. So first tab is the report view that I mentioned earlier. The second one is the data view. Data view में हम अपना table view कर सकते हैं. Let's suppose these are all the table. Employee का table है, ethnicity का है, FPA gender है. So ये सारा जो data है हम यहाँ पे change कर सकते हैं. और अच्छा डेटा के साथ साथ ना वी ओके सो दिस इज जैसे एक्टिव एम्प्लॉय हैं सारे विद इन द लास्ट ईयर. तो यहाँ पे जो हमने ये एक एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है दैट इज़ द डिक्स लैंग्वेज. कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक्टिव्स को और बेस्ड ऑन द सेम पीरियड लास्ट ईयर. तो बेसिकली ये जो लास्ट जून 2021 से लेके जून अब तक का जितना डेटा होगा, जितने एक्टिव्स होंगे, ये वो लेके आ जाएगा. सो इस तरह की जो एनालिसिस होती है ये हम डेक्स के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. एंड दीज आर बेसिकली द मेजर्स. ये जो जितने सारे यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हैं, ये सारे मेजर्स पर हमने क्रिएट किए हुए हैं. Right. We can perform the formatting as well. Let's suppose अगर हमें इस कॉलम की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, हमें इसमें जनरल पे कुछ करेंसी को करना है, हमें डेसिमल नंबर पे चेंज करना है, इसको हम वो चीज़ कर सकते हैं. इसको डेटा कैटेगराइजेशन पे अगर हमें इसको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर हमारा कोई एक एरिया को हमें डिफाइन करना होता है तो हम कैटेगराइजेशन पे जाकर उसको प्रोविंस या कंट्री कैटेगराइज कर सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ें अगर हम विद इन द डेटा कर देंगे ना, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम अपने विजुअल्स क्रिएट कर रहे होता है ना, तो बेसिकली पावर बीआई को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला एरिया है, इसको इसके थ्रू हम विजुअलाइज कर लेते हैं. लेट्स सपोज अगर कोई यूनिट प्राइसेस हैं, अगर उसको करेंसी में हमें शो करना है तो हम वो डायरेक्टली यहाँ से जाके भी कर सकते हैं. उससे हमारी विजुअलाइजेशन मोर इंटरेक्टिव हो जाती है. देन दिस इज़ द डेटा मॉडल. Like I was talking about the star schema. So this is the fact table and all other table are the dimension table. Again fact table में हमारे पास सारे एक तो सबकी keys होंगी and दूसरा हमारे पास उसका tenure day है, month है, anything that is measurable, right? तो उस तरह की जैसे कि एक्टिव्स हैं, इन सबके जो जो भी मेजरेबल आइटम्स हमने मेजर्स जो क्रिएट किए हुए हैं वो हमने सारे फैक्ट टेबल में क्रिएट किए हुए हैं. प्लस हम किस बेसिस पे इनको एनालाइज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें डायमेंशन टेबल में डाली हुई हैं. ठीक है. सो दीज ऑल आर द डायमेंशन टेबल. जेंडर फीमेल और मेल है. अब इसको हम इफेक्ट टेबल में रखने का आई मीन देयर इज़ नो यूज़. ठीक है. तो बेहतर ये है कि हम इसको इसका एक अलग डायमेंशन टेबल बना दें. देन वी हैव फुल टाइम और पार्ट टाइम सेपरेशन रीज़न. ये एक्स वाई जी चीज़ें जो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होती हैं, जिनके रीजंस होते हैं, इस तरह की चीज़ें हम यूजुअली डायमेंशन टेबल में डाल देते हैं और इनको हम रिलेट कर देते हैं यूजिंग द कीज़. कीज़ देखें जैसे यहाँ पे बनी हुई है, एफ पी की बनी हुई है विद एम्प्लॉय यूजिंग दिस एफ पी की. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं, सो सी इसके जो दिस इज़ एफ पी इज़ द की ऑफ दिस एफ पी और वन मैन टू वन का रिलेशन बना हुआ है. वी कैन एक्टिव ऑलरेडी एक्टिव दिस रिलेशनशिप एंड सो ऑन. अगर हमें कोई नया भी बनाना होता है तो वी कैन गो टू मैनेज रिलेशनशिप और यहाँ से हम जाके न्यू करते हैं. हम अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से टेबल पे किस टेबल को किस टेबल से लिंक करना है और उसके थ्रू हम रिलेशन बना सकते हैं. लेट्स सी अगर मैंने एज ग्रुप को किया हुआ है एम्प्लॉय से, तो एज ग्रुप इज़ अ डायमेंशन टेबल. पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लिया कि एज ग्रुप आईडी जो है दैट शुड बी लिंक टू द एज ग्रुप आईडी ऑफ दिस डायमेंशन टेबल, बट दिस इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, तो मैं भी इसको नहीं बना सकती. ठीक है. और बाकी सो दिस इज़ बेसिकली द स्टार स्कीमा. दिस इज़ द फ़िल्टर पेन. अच्छा मैं एक चीज़ एक और दिखा दूँ. यहाँ पे फ़िल्टर हम कैसे कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई द फ़िल्टर्स ऑन दिस पेज एज it's mentioned here. We can apply the filter on all pages and if I select to any visual we can apply a filter to this particular visual. ठीक है. यहाँ पे जितने सारी वैल्यूज़ थी इन पे सब पे ऑल हुआ हुआ है बट वी कैन ईजिली अप्लाई द फिल्टर्स. लेट्स सपोज इस पूरे पेज पे हमने एक ऑलरेडी फ़िल्टर लगाया हुआ है कि मंथ जो है वो दिसंबर ना हो. सो जो सारी एनालिसिस हुई हुई है वो टिल नवंबर तक हुई हुई है.
So this is how we do the filtration on the pages. Air हमने सिर्फ 2014 select किया हुआ है. We can select all and we can select none. So जो भी यहाँ पे हम filtration apply करेंगे, we can apply the filter और फिर उसके हिसाब से सारा data filter हो जाता है. Then we have a more visualization. If we click on this get more visual, हम अपने भी को visualization ला सकते हैं, online ले सकते हैं. Plus हम हर visual को किस तरह edit कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन पे अगर हमें उसका एक्स एक्सिस पे कुछ चेंज करना है, हमें उसके वाई एक्सिस की को वैल्यूज चेंज करनी है, वी कैन सिंपली डू दैट. उस विजुअल को उसका कोई नाम देना है तो वी कैन डू दैट टू. यहाँ पे टाइटल्स पे जाके हम इसको ऑन करके इसका नाम दे सकते हैं, इसको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं. आई मीन देयर आर मल्टीपल थिंग्स. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, खुद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं आप लोग. तो इट्स टू सिंपल. ये बेसिकली सारी फॉर्मेटिंग है फॉर अ पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन. Okay, so that is the sample view. Let's just create a simple visualization. I have already created one. एक इस तरह का sales data था. Let me just create it once more. So let's suppose you have opened the Power BI desktop. You are going to get the data by clicking in here, or आप इसको simply यहाँ से close भी कर सकते हैं. I've just closed the data. Now I'm going to get my data. This is totally blank. यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है. तो अभी I'm going to import my data, get data, and I'll go to the text and CSV. यहाँ से जाके मैं data set में सबसे पहले fact table को import करूँगी. So this is the fact table. This screen will pop up where the tool will ask you if you want to load the data, if you want to transform the data. But this looks perfectly fine to me, so I'm going to load the data. Acha, fact table is loaded. Now I'm going to load the dim date data. And I'm going to load another table, that is employee का table जो है, that is the Excel worksheet. तो हम यहाँ से जाके ऐसे इसको कर लेंगे. So once we load it, we should make sure कि तीनों tables एक दूसरे से link हुए हुए हैं so that we can create our visuals. Let's go to the first the data view to check the data. ये सारा data है हमारा date का. This is for the employee. This is the fact sales. Now if we go to the model view, we can see that the data is not being I mean, no model has been created here. तो हम fact table को यहाँ रखेंगे. Let's put it in the center. Dim date को हम थोड़ा side पे करते हैं and let's make a relationship between them. So we are going to अच्छा डेटा मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था तो मुझे पता था कि कौन सी की से किसको हमें रिलेट करना है. So we can make the connection here. We are going to simply drag and drop the connection कि हमने dim date की जो date है that should be linked to the fact table date column. तो invoice date की से हमने इसको इससे relate कर दिया और employee में हमने salesperson से किया है. So this is the salesperson key. This should be related to the employee key.
सो दिस इज़ हाउ वी मेक द रिलेशनशिप्स। ये एग्जैक्टली हम वहाँ से भी बना सकते हैं, मैनेज रिलेशन पे जाके, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, न्यू पे जाके वी कैन मेक द रिलेशन इन दैट वे एज वेल। नाउ वंस वी हैव क्रिएटेड द मॉडल, वी कैन गो बैक टू आवर विजुअलाइजेशन एंड लेट्स सपोज ये फैक्ट का जो टेबल है हमारे पास, यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव मल्टीपल कीज एंड वी हैव ऑल द unit price, the quantity, total tax amount, profit, and xyz items. Let's suppose if you want to know the quantity, if you want to know the total dry items and the total chiller items, basically we are analyzing the sale. तो उसके लिए हम एक quickly सी एक simple सी visualization create करते हैं. Let's select the cluster column chart and let's go to fact sale table, select total chiller item, total dry items, एंड द क्वांटिटी। यू नो ये सारे समेशन का साइन है, तो हम बेसिकली यहाँ पे जाके इनको सम, एवरेज, मिनिमम, काउंट जो भी करना है हम वो कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। नाउ दे ऑल आर इन द एक्स वाई एक्सेस। कोई भी चीज़ जो मेजर करनी होती है वो दैट शुड बी ऑन द वाई एक्सेस। अच्छा, हमें किस पीरियड पे हमें देखनी है, लाइक विद इन द लास्ट 6 मंथ्स या ईयर पे देखनी है, या मंथली देखनी है, वीकली देखनी है, तो वो चीज़ें हम वाई एक्सेस पे रखेंगे। सो वी विल गो टू द डिम डेट एंड वी विल सेलेक्ट द calendar year. You can drag and drop in here. तो ये हमारी जैसे दिस इज द फर्स्ट विजुअलाइजेशन वेयर यू कैन सी, लेट मी जूम इन, वेयर यू कैन सी कि 2013 में टोटल ड्राई आइटम्स कितने थे। यू कैन सिंपली hover over your visualization to know the quantity and the year and so on. टोटल ड्राई आइटम्स कितने थे, कैलेंडर ईयर कौन सा था, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, यू कैन सिंपली गो चेक द लेजेंड एज वेल। प्लस 2016 में वी कैन सी के टोटल चिलर्स इतने थे और क्वांटिटी फिर दैट इज़ द समेशन ऑफ द ड्राई एंड द चिलर आइटम्स। ठीक है, तो इस तरह की विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। हम इस पर फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें सिर्फ इस विजुअल पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करनी है तो हम किसी भी एयर को फिल्टर कर सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड अ कार्ड, अच्छा हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर बेसिकली प्ले अ रोल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अगर लेट्स सपोज हमें एम्प्लॉय वाइज सेल्स भी देखनी है तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय में जाके एम्प्लॉय की पे ऐड कर देंगे, स्लाइसर पे, सॉरी नॉट द एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय। ठीक है, सो दिस इज़ द स्लाइसर। यहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। दिस इज़ इन द लिस्ट फॉर्म, हम इसको ड्रॉप डाउन फॉर्म में कर सकते हैं और हम यहाँ से कोई भी हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये वाला जो चार्ट है ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा कि इस वाले एम्प्लॉय ने कितनी सेल्स की थी एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज़ द स्लाइसर। हम अपना एक कार्ड भी ऐड कर सकते हैं टू नो द टोटल प्रॉफिट और द टोटल क्वांटिटी के पूरे 4 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या टोटल क्वांटिटीज़ हमने कितनी सोल्ड आउट की हैं। इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। एक कार्ड हम ऐड कर सकते हैं टू मेंशन द रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। यहाँ पे लेट्स सपोज हमने फैक्ट सेल्स में जाके क्वांटिटी को ऐड कर दिया, सो इट विल शो मी 1 मिलियन। ठीक है, और मैं जैसे इन सबको सेलेक्ट कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कार्ड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, व्हाट एल्स कैन वी ऐड। अच्छा, आई एम गोइंग टू डीसेलेक्टेड। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज अगर मुझे देखना है कि डिस्क्रिप्शन देखनी है आइटम्स का, या मतलब कुछ इस तरह की चीज़ देखनी है, तो आई कैन ऐड द टेबल और द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली ड्रिल डाउन फॉर्म में आ रहा होता है, टेबल हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ें लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे क्वांटिटी हमने ऐड कर दी और हमने एम्प्लॉय का नाम ऐड कर दिया और उसकी यूनिट प्राइजेस देख ली, टैक्स अमाउंट देख लिया, इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी हमने तो हमें पता चल गया कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी सेल की है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह की विजुअलाइजेशन हम मल्टीपल विजुअलाइजेशन डाल सकते हैं। वी हैव मैप्स एज वेल, अगेन दैट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट के कौन सा विजुअल हमें यूज़ करना है। वी कैन ऐड द टेक्स्ट बॉक्स एज वेल। यहाँ हम एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे हमें पता चल जाए कि दिस इज़ द सेल्स डेटा
और इस विजुअलाइजेशन को हमें नाम चेंज करना है तो जर्नल पे जाके इसका टाइटल हम चेंज कर सकते हैं. Quantity sold. I mean, we can do multiple of things in the visualization section. तो इस तरह की एक शॉर्ट एनालिसिस थी. अच्छा, एक और चीज़ मैं लेट्स सपोज इफ आई वांट टू. ओके, सो लेट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म वन टेबल जो हम पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू करेंगे. पावर क्वेरी एडिटर में हम एक तो इस तरह भी जा सकते हैं कि वी कैन क्लिक ऑन दिस द टेबल एंड गो टू द एडिट क्वेरी, बट अभी मुझे इन टेबल्स को एडिट नहीं करना है. सो आई विल जस्ट इम्पोर्ट द अनदर टेबल. This is the customer table. Okay, so here if you can see the first column, this is totally irrelevant के column 1, column 2, column 3 define किया हुआ है. We don't need that. First row भी इसकी blank है, तो हमें इस तरह की चीज़ों को थोड़ा transform करने के लिए we are going to click the transform data. Then and in this will bring us to the Power Query editor. This is another screen. Power Query editor में transformation हो सकती है. This is more like जो हम Excel में करते थे. We are going to firstly remove the first row. ये हम कैसे करेंगे कि remove row में जाके remove top rows पे click करेंगे and we are going to define how many number of rows we want to remove. फर्स्ट रो रिमूव कर दिया हमने. सेकेंड रो को हमें ये जो फर्स्ट रो है हम इसको हेडर बनाना है, तो वी विल डू द यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर. ये हमारी सारी चेंजेस हो गई. अच्छा, यहाँ पे जो जो चेंजेस होती जा रही हैं दैट आर एप्लीकेबल ऑन द अप्लाइड स्टेप्स. सो लेट्स सपोज इफ यू वांट टू रिवर्ट बैक, तो हमें रिवर्ट करने के लिए इस क्रॉस को हम कैंसिल कर देंगे एंड इट इज़ गोइंग टू रिवर्ट बैक. और अगर हमें अपने पुराने स्टेप्स देखने होंगे वी आर गोइंग टू क्लिक द प्रीवियस स्टेप्स और वो उस स्टेप पे लेके चला जाएगा हमें. So there are multiple things that we can do in the Power Query. We can transform the data, we can format, we can split two columns, we can perform the scientific calculations and so on. बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं. अब लेट्स सपोज यहाँ पे क्रेडिट लिमिट के आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है, राइट. तो इस क्वेश्चन मार्क को हमें हटाने के लिए ऑब्वियसली अगर मैं इसको किसी विजुअल पे प्रेजेंट करूँगी तो वो विजुअल पे प्रेजेंट होगा नहीं, बिकॉज सबके आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा. तो इस चीज़ को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा कि हम टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर हम डिफाइन कर देंगे और इससे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेटा. वी हैव ये कुछ ब्लैंक से जो कॉलम्स हैं हम इसको रिमूव कर सकते हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस सॉर्ट ऑफ रिफाइनिंग कैन बी डन इन द पावर क्वेरी एडिटर. वंस दिस ऑल इज़ डन, हम होम पे जाके क्लोज एंड अप्लाई का बटन क्लिक करेंगे सो दैट दिस कैन बी एप्लीकेबल टू पावर बी आई डेस्कटॉप एज वेल. ठीक है, तो ये डम कस्टमर हमारे पास आ गया. अच्छा, हम एक और जब भी डेटा लोड करते हैं वी शुड मेक श्योर कि दिस शुड बी रिलेटेड टू द फैक्ट टेबल, दिस शुड बी लिंक टू द फैक्ट टेबल. तो ये फैक्ट टेबल से ऑलरेडी लिंक्ड हो चुका है एंड दैट इज़ लिंक टू द कस्टमर की. सही है. अगर नहीं हुई होती तो डेफिनेटली हमें करनी पड़ती. So this is all about the visualization. There are few more things. I mean, there are multiple of things that we can do on the visualization. अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, we can create the hierarchies. Hierarchies हम कैसे create कर सकते हैं, ये मैं quickly दिखा देती हूँ. Plus we can close off, turn off the interactions and turn off the interactions. इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं. हम majors बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था. एक सेकेंड. So let's suppose दिस इज़ द मंथली बजट अमाउंट. यहाँ पे हम ईयरली वाइज सारी एनालिसिस कर रहे हैं. यहाँ पे ऑलरेडी हायरार्की क्रिएट हुई हुई है. हाउ वी वुड डू दैट, लेट्स सपोज अगर मैं हायरार्की कैंसिल करती हूँ और मैं क्या करूँगी कि डेट डिम पे जाके मुझे इस तरह की हायरार्की क्रिएट करनी है कि वो ईयर के बाद क्वार्टर पे जाए, क्वार्टर के बाद मंथ पे, देन डेट पे एंड सो ऑन. तो इस तरह मैं एक हायरार्की क्रिएट करूँगी.
I'm going to create on this, then create hierarchy. Here इस वाले hierarchy को हम delete कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इस हायरार्की पे हमें सबसे पहले एक ईयर ऐड करना है, तो वी आर गोइंग टू year is already added, then we are going to add the quarter, add to hierarchy, and then we are going to add the month name. Month name पे right click करेंगे, add to hierarchy option आएगा, and then we are going to add the date key. हमने ये एक नई हायरार्की क्रिएट कर दी. तो अगर इस विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास किसी भी टाइम पीरियड पे एनालिसिस नहीं हो रही, लाइक एक्सेस एक्सेस पे अभी कुछ भी नहीं है. सो वी आर गोइंग टू सिंपली ऐड दिस हायरार्की टू द एक्स एक्सेस एंड वी विल गेट दिस डेटा. अब इस हायरार्की को हम ड्रिल डाउन और ड्रिल अप कैसे करेंगे? अभी तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो इट इज़ फिल्टरिंग द डेटा, राइट. और टू enable the hierarchy, to enable the drill down option, we are going to click this. और इसके बाद फिर अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये क्वार्टर मुझे शो कर रहा है. देन आई एम गोइंग टू गो टू द क्वार्टर 2, उसके मंथ शो करेगा. और मई में फिर अगर हमें इसकी एनालिसिस देखनी होगी तो मई 1 का ये डेटा शो कर देगा. ठीक है. इसी तरह जिस तरह मैं सेलेक्ट करती जा रही हूँ उस तरह की ये दो ऊपर विजुअल्स भी जो है वो चेंज होते जा रहे हैं. वी विल गो अप, और ड्रिल डाउन करने के लिए हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. बाकी हम इसको बंद कर देंगे तो ये सिंपली इसको लिए सेलेक्ट हो रहा होगा. ठीक है. बाकी हम ये डबल एरो से भी इस तरह कर सकते हैं. ये सारे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 सारे ईयर्स का दिखाने लग जाएगा एक साथ, एंड सो ऑन. आई मीन ये चीज़ें वो हैं जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन. Another thing is that we can off the interaction. Let's suppose यहाँ पे जो इनके cards हैं, I don't want them to change whenever I select any particular bar. तो इसके लिए मैं interactions close कर सकती हूँ. How do I do that is go to this card format, and here is the added interaction options. तो ये जो एक सर्कल है, आई विल क्लिक ऑन देम. तो इससे क्या होगा कि हमारी इंटरेक्शंस ऑफ हो जाएंगी. सो लेट्स सपोज अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो यू कैन सी दैट कार्ड्स आर नॉट बीइंग मॉडिफाइड नाउ. तो इस तरह इंटरेक्शंस हम क्लोज कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, एंड सो ऑन. यहाँ पे सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं. किसी भी तरह की हमें सॉर्टिंग करनी होती है, सॉर्ट लेजेंड कर सकते हैं, कॉलम्स के नाम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मेजर्स बनाने हैं तो न्यू मेजर हम यहाँ से बना सकते हैं, क्विक मेजर हम यहाँ से बना सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं, एंड सो ऑन. So yep, that's all about the data visualization and Power BI. If you have any question, you can ask me. Assalamu alaikum. Can you hear me, Zunerah? Walaikum assalam ji. Okay. So, कुछ questions हैं. I'll try to pull them up on the screen so you can have a look at them. वैसे one of the guys on the session, he tried to answer that in the comments as well. So, if you wanna Okay. answer them as well. Can you see the question? Mm, yes. What are the sources to import data and the binary like that? Okay, so basically there are two options in order to import the data in Power BI. First option is the we can use the import data, and another thing is that we can get the data by using the direct query. तो import हम multiple files से भी करा सकते हैं, either it's CSV file और XLSX file, कोई भी flat file हो वहाँ से हम करा सकते हैं, and we can directly connect to the database और वहाँ से जो भी data आ रहा होगा हम उसको Power BI पे show करा सकते हैं. So we have two options in like Power BI, direct query and import data. Okay. Achha, there is another question on your screen.
What about the new data once you publish your dashboard? How would you provide the new data to the dashboard? New data as in, I mean, अगर हमें new data चाहिए होगा तो let's suppose अगर कोई नया table चाहिए होगा तो we would definitely be modifying our whole dashboard. वंस वी पब्लिश इट, उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे फिर से जाएंगे, अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे, और अगर उस नए डेटा की आई मीन कोई भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है तो हम वो फिर करके हम उसको बाद पब्लिश करेंगे. ऑब्वियसली पावर बीआई को हम डायरेक्टली पावर बीआई सर्विस से लिंक नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कर सकते कि नया डेटा जो यहाँ पे आया है वो पावर बीआई सर्विस पे चला जाए, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें परफॉर्म होने लग जाए. तो डेफिनेटली वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग आवर ओन थिंग्स. RK, you're not audible. I'm sorry. So there's Okay. another question. I'm not sure what it There is means. Does it make any sense to you? there is a graph on other dashboard for age group. How can we create that one and interpret? There were multiple graphs on the dashboard. कौन से graph की बात हो रही है? I'm He not was sure. actually talking about this one, the age group. How can we explain bottom right visual for the age group? Do you remember now? I have three dashboard created in my Power BI desktop. I'm not sure which one is it Forget it. talking about. There's another Oh, question. what is the possibility of combo chart is just bar along with the line chart through it? What is going for? What is the possibility of combo chart such as bar chart along with the line chart through it? I mean, what sort of possibility of combo chart is he asking about? The when do we use a combo chart? Combo chart is basically a combination of a bar chart and the line chart. तो अगर हमें दो बार चार्ट के साथ साथ एक थर्ड कॉलम को भी रिप्रेजेंट करना होता है, थर्ड हाँ थर्ड कॉलम को भी रिप्रेजेंट करना होता है, तो बेसिकली हम उसको लाइन चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं, एंड वी कैन डिफाइन दैट थिंग इन द लेजेंड एज वेल. तो अगेन दिस इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि हम कॉम्बो चार्ट यूज़ करें, जैसे मैंने अभी दिखाया भी था कि हम एक विजुअल को हर विजुअल में चेंज करके देख सकते हैं, तो जो भी परफेक्टली हमें अपने नीड्स के लिए लग रहा होगा हम वो सेलेक्ट कर लेंगे उस चार्ट को. आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स द पॉसिबिलिटी इज. Do you see the next question on your screen? Yes. So does it support real-time data sync with SQL database, or do we have to import it every time? No, it does support. The SQL database. I mean, real time पे हम जो भी data होगा हम SQL से connect कर सकते हैं. We can definitely do that directly. This is the direct query option. हम क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, तो जो भी डेटाबेस में एंटिटीज पॉपअप होती रहेंगी, वी आर गोइंग टू सी दोज एंटिटी इन द पावर बीआई डेस्कटॉप. सो अच्छा, इससे एक परफॉर्मेंस हिट होती है ऑब्वियसली, बिकॉज हम पावर बीआई में जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे होते हैं टेबल पे, वो डेटा हमारे पास एसक्यूएल से आ रहा होता है, तो थोड़ा लैक होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस हिट होती है. सो आई वुड प्रेफर टू यूज़ द import data option on the Power BI desktop, but we can do this real time data sync. Next Can we question in is the on your way screen. display these when we're in the like it through some sort of a API, so we don't have to create it in the website? Yeah. I believe yes, we can display these visualization in the web page. हम reports को embed कर सकते हैं. मैंने honestly speaking I've never done that, but मुझे पता है कि इसको हम embed कर सकते हैं, and we can show them to the web application. I know it is time consuming कि हम उसको बार बार जाके publish करें, बार बार Power BI service पे लेके जाएं, तो we can embed these visualization on the web page. What is the little off topic? MS Azure World. Any idea about this one? No. Data visualization tool. There are multiple tools. I'm not sure if we have a particular data visualization tool for MS Azure World. I can definitely Google it and let you know. All right. So I think I have something to share before we wrap up today's session. You should be able to see my screen now, do you? Zunerah, my screen Yes. nazar aa raha जी जी जी. hai? Okay. So guys, this is our upcoming training session. Laravel training. ये
8 वीक्स लॉन्ग सर्टिफिकेट कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 18 जून को। तो ये सैटरडे के सेशन है, वीकेंड बेस्ड कोर्स है। और देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेरीज कमिंग अप कि क्यों लारावेल को सीखें और इसका क्या फ़ायदा है इंडस्ट्री के अंदर, क्या डिमांड है। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव अरेंज्ड अवेयरनेस सेमिनार टुमारो एट 8 PM इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। जो हमारे ट्रेनर हैं, यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन द right hand side, Khurram Khawaja. So he'll be answering your questions. So come up with lots of questions tomorrow, 8 p.m. और get to answer here. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है जुनेरा, if you can, I'll let me put it up on my screen. Can you see? Okay, so what is the difference between DEX and AM language? As I mentioned before, DEX is basically used for your data analysis. ठीक है, ये कोई डेक्स लैंग्वेज, इफ आई कैन शो यू, मुझे उस वक्त दिखा देना चाहिए था, बट डेक्स लैंग्वेज इज लाइक हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं जो हम एक तरह से एक्सेल में भी यूज़ करते हैं। सम का फार्मूला है, सम एक्स का फार्मूला है, एवरेज, काउंट, कुछ हमारे पास फिल्टर के फार्मूलाज होते हैं जो मैंने आपको दिखाई भी थी, कैलकुलेट का फार्मूला था। तो इस तरह के जो फार्मूला होते हैं जिससे हम मेजर्स क्रिएट करते हैं, जिससे हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं, उसको डेक्स लैंग्वेज कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज। और एम लैंग्वेज जो है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द पावर क्वेरी एडिटर। Nobody know about the M language, या no one knows to know how to use this language. ये Power Query Editor use करता है within the Power BI. So this is basically deck से हम अपनी analysis कर रहे होते हैं, M language से हम अपनी transformation और data modeling कर रहे होते हैं. This is Okay. completely whole within the Power BI desktop. All right. Thank you, Zenera, for giving us so much time today. Thank बड़ा you. मज़ेदार सेशन था आज। और once again, we'll be having an awareness session tomorrow about our upcoming Laravel training, जो 8 week long certificate course है। उसके बारे में कल एक हमारा awareness seminar होगा और जो trainer है खुरम ख्वाजा, so he'll be answering your questions. See you guys next Thursday, rather tomorrow and then next Thursday. Till then, take care of yourself. Bye bye. Thank you, Allah. Hafiz.